बना, जीव जंतु बने 5 तत्वों से, और उसमें से एक है मिट्टी। अभी मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इस सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र तब साकार होगा जब धरती बचेगी। मित्रों, हम सब आभारी हैं सदगुरु के। हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ, अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए, हीरा, लोहा, सोना, कोयला, हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं, पानी उलीचते जा रहे हैं, जंगल साफ कर दिए। हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है, नग्न करने का अपराध किया है। हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी, देशवासी भी, अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो, कीटनाशक डालो, 3 फसलें लो, और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो, पराली जला दो। कितने जीव जंतु जलते हैं, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, अन्न विषैला हो गया है, धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है, और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी। तब क्या होगा ये सोचिए। और इसलिए ये सामूहिक कदम है सदगुरु, आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। सारा मध्य प्रदेश आपके साथ है। आपने जो प्रस्ताव दिया है मध्य प्रदेश अक्षरशः उसका पालन करेगा, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें हम अभी कर रहे हैं। नंबर 1, हम पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और सदगुरु मैं स्वयं, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए मैं रोज पहले 1 पेड़ लगाता था। कोविड हो गया, उस दौरान भी मैंने पेड़ लगाने नहीं छोड़ा। मैंने कहा गड्ढा करके पेड़ रख दो, मैं लगा दूंगा। लेकिन अब मैं पेड़ अकेला नहीं लगाता, कोई ना कोई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्था, अन्य व्यक्ति मेरे साथ वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण का सिलसिला चल पड़ा। हमने एक अंकुर कार्यक्रम बनाया है, अंकुर अभियान हाथ में लिया है, जिसमें मैंने अपील की है कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी अगर ढंग से मनाना है तो पेड़ लगाने से अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या हो सकती है। अपने माता और पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सदगुरु आपके बताए मार्ग पर चल के हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, दोनों तटों पर वृक्ष रोपने का अभियान शुरू किया था, और मध्य प्रदेश में ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, अगर एक वयस्क पेड़ एक बड़ा हो जाता है तो वर्षा जल को अवशोषित करता है, जड़ों से धरती में भी पहुंचाता है। जब गर्मी होती है तो पेड़ों की जड़ें बूंद बूंद पानी छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना, कितने जीव जंतु, फल तो हमें दिखाई देते हैं, छाए हमको दिखाई देती है, लेकिन कभी ध्यान से पीपल के, बट के पेड़ को देखना, पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, कीट पतंगे, जीव जंतु, एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और एक बात सुन लेना, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। इस धरती पर अधिकार पशु पक्षियों का भी है, कीट पतंगों का भी है, पेड़ पौधों का भी है। हमारी नदियां ठीक हो, हमारी जल संरचनाएं ठीक हो, क्योंकि ये जब सब ठीक होंगे
तब हमारा इकोलॉजी सिस्टम ठीक बना रहेगा। और इसलिए मैं मानता हूं पेड़ लगाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने तय किया है, जन अभियान परिषद के लोग यहाँ बैठे होंगे, हरियाली अमावस्या के दिन हम फिर व्यापक पैमाने पर 1 महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। और जो अपराध हमने किया है पेड़ काटने का, एक बार फिर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश को हरा भरा बना के चैन की सांस लेंगे। सदगुरु, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दूसरी चीज हमने तय की है, जलाभिषेक अभियान। हमने तालाब समाप्त कर दिए, नदियों के पानी को भी हम सोख लेते हैं। इंडस्ट्री ले जाती है, खेती ले जाती है, जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। ये पाप भी हमने किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरीबंधन, पर्कुलेशन टैंक, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अमृत सरोवर। मध्य प्रदेश 5000 अमृत सरोवर बना रहा है। इसी साल जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत हम लगभग 2 लाख वाटर बॉडी जल संरचनाएं बना रहे हैं, अलग अलग छोटी बड़ी। और हम पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पेड़ की जड़ें जब मिट्टी के कटाव को रोकती है, अगर पेड़ होते हैं नदियों के किनारे तो मिट्टी बह के जा नहीं पाती, मिट्टी बांध लेती है। लेकिन हमने तो नदियों के किनारों तक को भी जोत दिया, इससे मिट्टी का कटाव भी होता है। ये दोनों काम, पेड़ लगाना ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा, जलाभिषेक ये पानी में नीचे ले जाके भूजल का स्तर भी बढ़ाएगा, और अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी मिट्टी को बहने से रोकने का भी काम करेंगे। तीसरा काम सदगुरु आपके आशीर्वाद से ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश में हमने तय किया है। परंपरागत ऊर्जा के हमारे जो संयंत्र है, जो कोयले से बिजली बनाते हैं, अब उन पर निर्भरता कम करके हम सूरज से बिजली बनाएंगे। सूरज से ज्यादा ऊर्जा और कहां हो सकती है। हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पे जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण को भी हम बचाने का काम कर सकें। और चौथा काम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज मुझे आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम जैविक खेती कर रहे हैं। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना है हमको। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग, हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ की है। मैं स्वयं और मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान, हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जमीन के एक हिस्से में नहीं करेंगे। गाय का गोबर, गोमूत्र, गोड़, उससे जीवामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा। ये जीवामृत अगर हम धरती पे खेत में डालेंगे तो वो केंचुए और अलग अलग तरह के कीट और कृमि जो धरती के नीचे चले गए वो ऊपर आएंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे, धरती को उलट पुलट करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, कई सुराख होंगे, उससे पानी भी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और धरती की सतह को फिर से उर्वरक बनाने का प्रयास करेंगे। माटी बचेगी, धरती बचेगी हमारे इस अभियान से। तो इस अभियान को भी सदगुरु हमने हाथ में लेने का प्रयास किया है। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। लेकिन मेरी बात समाप्त करूं इसके पहले मेरे मन में एक विचार आया है। हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल समिट करने की एक बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण समिट होनी चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि देश के विशेषज्ञ, इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, आप जैसे सदगुरु हमारे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करें। इसमें हम पारिस्थितिकी ढांचा विकास का काम, ढांचागत विकास का काम, मध्य प्रदेश में हो रहे इकोलॉजिकल के काम और लोगों का दृष्टिकोण, और इसके साथ साथ ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसकी हम बात करेंगे। और इसमें विशेषज्ञ और आम व्यक्ति हवा, मिट्टी, पानी और जंगल बचाने में जो जुड़े हैं उनकी भागीदारी इसमें होगी। और इसलिए इस अभियान को भी हम प्रारंभ करेंगे। अब ये जो हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आपको सुन रहे हैं,
पूरे देश और दुनिया में आपको सुन रहे, आपने अद्भुत पुरुषार्थ का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप सारी दुनिया को सही ले जाने में सक्षम महापुरुष हैं। आप सही अर्थों में सद्गुरु हैं। मैं एक बार फिर आपका यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको प्रणाम करते हुए मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए, हम सबको मार्ग दिखाइए, दुनिया का मार्गदर्शन कीजिए, मिट्टी बचाइए। और केवल आप नहीं, हम सब मिलके मिट्टी बचाएंगे। बोलिए बचाएंगे, सब मिलके बचाएंगे। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे। सदगुरु ने जो राह बताई है उस पर चलेंगे। तो सदगुरु यहाँ आए उसके पहले संकल्प लीजिए कि मिट्टी बचाने के अभियान में हम केवल यहाँ आपको सुनने नहीं आए, सुन के हम गुनेंगे और आप जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलेंगे। संकल्प के लिए आप तैयार हैं? जोर से बताएं, तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे, मिट्टी बचाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सदगुरु की, सदगुरु की। और ये नर्मदा का प्रदेश है, सदगुरु आपके साथ नर्मदा सेवा यात्रा की है, इसलिए हर हर नर्मदे। और इसके साथ ही मैं सदगुरु प्रार्थना करता हूं, आप पधारिए और हमें मार्ग बताइए, रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब हम सदगुरु को सुनेंगे। हेलो 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 हाँ न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। Namaskaram, namaskaram to everyone. Namaskaram, sir. Just little bit, the volume. Can you hear me? Well. This is probably the 79th day. I've lost track of days, somewhere around that, around 80 days maybe. And nearly 25,000 kilometers, 27 nations, 74 nations have signed up for Safe Soil. And of course, the 4 states in India. And this is the 533rd event that I'm doing since 21st of March. And still in one piece. Thanks to all of you. And over 2.5 billion people have spoken about soil since 21st of March.
Why? Why a movement like this has become necessary? The human condition is like this. There was a potato farmer. I'm telling you a story, okay? But if you have to listen to a story, if you must deserve a story, you must respond properly. When I say once upon a time, you must say, ha ha. Once upon a time, there was a potato farmer. One day he wanted to eat mangoes, and then he went in search of a mango tree, and he found a mango tree. But out of sheer habit, looking for mangoes, he started digging the ground because he's a potato farmer. And when he did not find any mangoes, he became very furious and started digging crazy. Then slowly the tree came down on him. This is the story of modern day humanity. This is what we are doing. In search of human happiness, in search of human well-being, we are digging up the whole planet, thinking we'll find happiness somewhere. Wow, last 40 years, I've been trying to teach all of you inner engineering, trying to tell you human experience essentially comes from within you. Joy and misery comes from within you. Pain and pleasure happens from within you. Agony and ecstasy happens from within you. Anything that ever happened to you happened from within you. Human experience is manufactured within you. When human experience is manufactured within you, looking for happiness, being in pursuit of happiness is a silly pursuit. But unfortunately, the world has gotten into this habit like the potato farmer. If I want to be happy, I must do this, this and that, I must have that, that and that endlessly. No, to be happy means you're pleasant in your mind. Let me talk about pleasantness. If your body becomes pleasant, we call this health. You want it? See, every time I ask you a question, I'm going to bless you. You say yes, no or silence. Accordingly, I'll bless you. Pleasantness of the body is called health. You want it? That's good. If it becomes very pleasant, this is called pleasure. If your mind becomes pleasant, we call this peace. If it becomes very pleasant, we call this joy. If your emotions become pleasant, we call this love. If it becomes very pleasant, we call it compassion. If your very life energies become pleasant, we call this blissfulness. If it becomes very pleasant, we call it ecstasy. If your surroundings become pleasant, we call this success. Only to make your surroundings pleasant, you need the cooperation of people and forces around you. But to make this body pleasant, mind pleasant, emotions pleasant, your energies pleasant, it's 100% your business. It is 100% your business. No, Sadhguru, I want to be very happy, but my wife, my husband, my mother-in-law, my neighbor, oh, before you are happy, the whole world has to be fixed. In that effort, we have destroyed the planet. So I want you to understand, this destruction, this damage to the planet, particularly to the soil, has not happened because there is some evil force sitting somewhere wanting to destroy the planet.
this has happened in pursuit of human happiness and well-being. That means every one of us, knowingly or unknowingly, are partners in this destruction. And the only way we can fix it is that every one of us should become partners in the solution. Are you? This is important because I'm saying this because world over, yesterday it was in the news, I don't know if you saw in the newspapers, that somebody went into the French Louvre Museum and threw a cake at Mona Lisa because she's smiling. There are some people who don't like you smiling. They think anger is an answer, but they are fighting for climate change, they are fighting for global warming. If you get angry, definitely world will get hotter, for sure. You've seen this in your home, hello? When you get angry, definitely there's global warming happening. So it's important that we understand this is not an agitation, this is not a protest, this is not an expression of our anger against somebody. This is an expression of our love for the life that we are, our love and responsibility for the life that we are because we value this life, and the life that's around us because we value that life, and the life that should be beyond us, which is very important. Right now, that is what has come to question. Whoever you are, whatever is your caste, creed, religion, gender, it is intrinsic to you that you want your children to live better than you. Hello? But right now what we are doing is just this, that we are removing the foundations for good life for the future generations. If there is no nutritious food, clean water and pure air to breathe, do you really think there are fundamentals necessary for good life available for future generations? So that's exactly what we're doing. One important thing that I would like to bring to Honorable Chief Minister's notice is, and very important is, we must separate the issue of soil from other ecological concerns, not because they are not of significance, they are also of significance, but they will run into various economic issues. If we talk about carbon emissions, fossil fuels, you will run into collision course with oil industry, coal industry, automobile industry and many other industries. If you talk about fertilizers, pesticides, you will run into those industries. None of these industries were built overnight. They were built over many decades, some of them over a century. So you can't close them down tomorrow morning either. And above all, we must understand that this whole process of using chemical fertilizers and pesticides happened in the world in different ways. In India it happened because during 1940s and 30s, we had terrible famines. 1942 famine in India took 3.2 million people in 4 months' time. A famine means it is the most terrible way for a human being to die. It's not like a war, somebody will shoot you and you're dead. This will take 3 to 4 months to die very slowly. It is the most painful and horrendous way for a human being to die. So we had seen famines. Almost every 2-3 years there were famines in the country. So in the 50s, we took this step of heavily using chemical fertilizers and various other kinds of chemicals to cross that famine situation. It was a bridge. We got onto the bridge and it worked. We must understand this. When the fertilizer usage happened in India, in many places the yield went up by 300%, 3 times over. So people thought this is magic powder and they started throwing it everywhere more and more.
and it is the nature of the chemical that slowly, year on year, it'll demand more and more. As we did this, slowly all plant life went out of the farms. And because there was more and more work, machines came. Because machines came, animals went out of the farm. Once plant life and animal life goes out of the farm, there is no organic content. This is something all of you should understand. There are only two sources of organic content, not just on this planet, in the known universe. There are only two sources of organic content, plant life and animal life. There is simply no other way. If we do not bring back plant life and animal life back on the farm, land or soil will die in the next 25 to 40 years' time. This is not just India's problem, this is a global problem. Not a single nation, not even a single nation in the world has the minimum 3% organic content that is necessary to call soil as soil. The UN has set up the standards that to call soil as soil, there should be a minimum of 3% organic content. Not even a single nation in the world has that average. The highest average available in the world right now is in Northern Europe. It is 1.48%. Southern Europe is 1.1%. United States is 1.25%. India is 0.68%. Africa is 0.3%. This is death. If you have not seen the news, in the last few days it's been in the news. Unfortunately, it doesn't get the kind of attention that some other parts of the world get, but already two nations in Africa are going into famine condition right now, simply because there's a war somewhere else. Two nations are going into severe hunger. It is expected that in the next 6 months, 350,000 children will die. 3.5 lakh children will die in these two countries because there is no food to eat. Because when famines happen, the first to die is always children and the older people. Others will die slowly. So this is beginning to happen. This year it is expected about 6 nations will go into famine conditions. After so much development, after so much infrastructure, after so much technology, after so much knowledge everywhere, once again, if we drive towards famines, this is unpardonable. As a generation of people, we cannot afford this and we should never again go towards famine, because famine means most terrible things happen. Across the world, such things have happened, very cruel things. When famines have happened in many nations, parents have chopped off the limbs of their own children and eaten it to survive. Because they don't want to kill the children, they cut their hands off and eat it up. After doing such a thing, even if you survive, can you live a normal life? Is it something that any human being should experience in their lives, that they had to eat the limbs of their own children? But once famine situations come, that's where it goes. Right now it may look like a little bit of fear-mongering what I'm talking, but I want you to understand, on an average, 27,000 species of organisms are disappearing per year. 27,000 species, you heard it right, not organisms. 27,000 species are going extinct per year. That means the bioactivity is just sliding like that. In another somewhere between 25 to 40 years, according to every calculation, it looks like somewhere between 25 to 40 years, this slide will become a tumble. When it becomes a tumble, we will not be able to do anything. It'll be beyond our hands. Maybe it could wipe out a quarter of the population, or some people fear it could be 60% of the world's population could die once bioactivity in the soil starts tumbling down. We need to understand, when it comes to soil, when it comes to soil ecology, our national borders and boundaries mean nothing. These are human problems. We think we can cut the planet like a cake and take our own piece.
For political and administrative purposes, we can divide the world. But these divisions are not absolute, because when it comes to soil, when it comes to biodiversity, when it comes to life, life is happening one global phenomena. If we don't respect that, we will pay a huge price for this, which is very close. Every responsible scientist is clearly pointing out that in the next 25 to 30 years, there will be severe food shortages in the world. By 2045, it's expected our population will be 9.3 billion people and we will be producing 40% less food. Right now it doesn't look like that. India can even export wheat. That's how it looks. But when the biodiversity begins to tumble, things will change so rapidly, we won't be able to fix it. It's time now, as a generation of people, this is a great challenge that we face. At the same time, it's a great privilege that we as a generation have this capability. We are in that cusp of time that if we act now decisively with the necessary policies, we could be that generation. We turn back from the brink of a disaster, or